Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Mohammed Anwar, and you're watching my channel, Mohammed Anwar, and Education for Us All. So, a quick plea before we go further to please watch all videos fully. Please like, share, and subscribe to my channel. Welcome to this presentation, which is in the Recipe of the Day series. So this has been requested a number of my what can I say, English friends or local friends who wanted me to write things down in PowerPoint form so that they've got step by step, and there's some, what can I say, very very simple things here as well. For example, making chapatis. So for most of us Asians, Pakistanis, Indians, making chapatis is not a big thing. So, even those things are in the recipes, which are taken from the BBC website, by the way. Okay, so I'm going off the point. So today's recipe is mushroom, chickpea, and spice and spinach curry, which we make quite a number of times. Over a month. So as I said, this has been taken from the BBC website. नाज़रीन खुश आमदीद, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। एक बार फिर जी, रेसिपी ऑफ द डे जो मेरे इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स और सफ़ेद पोश दोस्तों ने फरमाइश की थी, तो उनके लिए ये प्रेजेंटेशन है। ये बहुत बहुत क्या क्या मुख्तसर और इजी रेसिपीज़ हैं, और इनमें सिंपल चीज़ें हैं जैसे रोटी बनाना और साथ जो सालन, ये बीबीसी वेबसाइट से मैंने लिए हैं, तो इनका मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ओके जी, ये नंबर 44 है। तो आज की रेसिपी में जो रेसिपी का तरीका है वो है मशरूम चिकपी यानी चना और साग का सालन। ओके, लेट्स शो यू द इंग्रेडिएंट्स। ये हैं जी आयतजा जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। Okay, so as you can see, we've got the things that you'll need for chapatis. आटे का पहले तरीका है जी, और ingredients हैं 250 grams of flour, और थोड़ा सा, और a bit of extra for dusting, और थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जब आप उसको क्या कहें पेड़ा बनाएंगे। ओके, 50 grams of butter melted, बटर आपने पिघलाना है। हाफ अ स्पून ऑफ सॉल्ट, ये ज़रा आटे में डालेंगे। एंड फॉर द करी वी नीड ऑलिव ऑयल फॉर फ्राइंग, जैतून का तेल, 400 grams of mushrooms thickly sliced, 400 ग्राम मशरूम्स जो आपने मोटी सी काटनी है, एक प्याज, 1 onion roughly chopped, 3 garlic cloves, 3 lessons के cloves, 30 grams a piece of ginger, 30 gram अदरक, 30 gram tomato puree, 30 gram, 1 tablespoon of garam masala, half a teaspoon of paprika or chili powder, आधे चम्मच paprika या chili powder ज़रूरत होगा जी। 2 tins of chickpeas, या हम डब्बे वाले चना इस्तेमाल करते हैं नाजरीन, वो 400 ग्राम वाले होते हैं। Where are we? 400 grams of tomatoes, again from a tin. Tomatoes भी हम tin वाले इस्तेमाल करते हैं। तो 250 grams of spinach, again it says frozen but I like fresh। 250 ग्राम नाजरीन साग, 100 grams of yogurt, 100 ग्राम दही, 30 grams of coriander roughly chopped, 30 ग्राम धनिया, और आखिर में नमक और काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, so salt and pepper to taste. Okay, so let's have a look at the method.
Yeah, तरीका नाजरीन. So मैं quickly ये पहला रोटी वाला तरीका पढ़ते हैं. So this is the anybody who doesn't know how to make chapatis. To make chapatis, tip the flour into a flour bowl and the salt and make a well in the middle. Gradually stir 160 to 180 milliliters of water and mix well to form a rough dough. Turn out into lightly floured surface and knead for 5 minutes until you have a smooth, elastic ball of dough. Cover with an upturned bowl or a clean tea towel and leave to rest for 20 minutes. नाजरीन ये क्या कहें आटा बनाने का तरीका है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आटा बनाना आता होगा. बोल में आटा डालना है तो फिर उसको पानी डालना है और गूंदना है और उसको 20 मिनट्स के लिए साइड पे रख देना है. Okay. Heat a splash of oil in a large saucepan over high heat and fry the mushrooms for 5 to 10 minutes until golden brown and transfer to a plate with slotted spoon. Okay, नाज़रीन सबसे पहले अब हम सालन तैयार करेंगे. मशरूम्स को फ्राई करना है एक छोटे पैन में 5 या 6 मिनट्स जैतून के तेल में और जब तक ये भूरा रंग इनका हो तो फिर निकाल कर प्लेट में रख देंगे. Wipe the pan piece with a piece of kitchen roll and add a little more oil and reduce the heat slightly. Fry the onions for 4 to 5 minutes until soft. Then add the garlic, ginger, and fry for a couple of minutes more. Add the spices, fry for 30 seconds, and then add the tomato puree and tip in the chickpeas. Fry for a further minute, then add chopped tomatoes to the pan, stir in the cooked mushrooms and cover and simmer gently for 10 minutes. ओके जी, सबसे पहले हमने पैन को साफ़ करना है किचन रोल से. तो फिर हम और तेल डालेंगे तो हीट जो है वो थोड़ी हल्की करेंगे और प्याज फ्राई करेंगे 4 या 5 मिनट्स के लिए. तो फिर हम डालेंगे जी थोम और अदरक और इसे फ्राई करेंगे कुछ मिनट्स के लिए. फिर हम मसाले डालेंगे और इन्हें 30 सेकंड्स के लिए हम फ्राई करेंगे. तो फिर हम डालेंगे टमाटो प्यूरे तो और उसके साथ ही हम डालेंगे चिकपीस यानी चना. इसे हम फ्राई करेंगे कुछ मिनट्स के लिए. आई वुड से 5 to 6 मिनट्स. तो फिर इसके बाद हम टमाटोज जो हैं वो पैन में डालेंगे और इसे हिलाएंगे और उसके बाद हम जो मशरूम्स तैयार किए थे वो डालेंगे. तो इसे हम 10 मिनट्स के लिए यहाँ लिखा हुआ है कुक करेंगे. आई ऑलवेज ऐड अ लिटिल बिट ऑन. I'd say 12 to 15 minutes. Okay, that's it. Remove from the heat, stir in the spinach and yogurt and season to taste. Okay, so what you have to remember is that they are using um, frozen spinach. So here it just says take it off and put the spinach in and the yogurt and stir. नाजरीन ये फ्रोज़न स्पिनच यहाँ लिखा हुआ था तो वो ऐसा करते हैं कि बस उसमें डालकर उसे पिघलाने दें. मैं थोड़ी देर के लिए कुक करता हूँ. Okay, so yes, so we add, I would say, add the spinach and cook and then add the yogurt and season. The season was the salt and pepper. Okay जी, so हम पालक डालेंगे उसे कुक करेंगे तो फिर उसके बाद हम योगर्ट और जो नमक और काली मिर्च है वो डालेंगे. Okay, while the curry is simmering, make the chapati, divide the dough into 8 equal parts and roll each into a neat ball. Lightly dust
the surface with the flour, then use the rolling pin and roll each into thin dice roughly 15 centimeters. So यहाँ लिखा हुआ है कि आपका सालन जब तैयार हो रहा हो तो फिर आपने रोटी पकानी है, उसका तरीका लिखा हुआ है। आई एम श्योर आप सबको रोटी पकानी आती है, नहीं तो मेरे उर्दू वाला सेक्शन जो है उस वहाँ पढ़ ले। ओके, फाइनली heat a non-stick frying pan over medium to high heat and cook the chapatis one at a time for 20 to 30 seconds per side until puffed up lightly. Brush with melted butter and serve with curry. Okay जी नाज़रीन, फिर ये चपाती का फाइनल स्टेज लिखा हुआ है कि रोटी बनाने पैन पर आपने 20 या 30 सेकंड्स ईच साइड कुक करनी है, तो फिर उसका बटर लगाएंगे तो जो हमने सालन तैयार किया है उसको उसके साथ वो एंजॉय करेंगे. Okay, so very long-winded, but it really is very simple. The curry is simple, the chapatis are very simple. Let's have a look at the picture. नाजरीन, ये यहाँ बहुत अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आप बहुत आसान रेसिपी है. Okay, there we go. It really is a lovely dish, नाजरीन. ये खासकर जब बटर डालते हैं रोटी पर तो क्या कहें, उसका मज़ा ही और है. Sorry, I forgot to mention the garnishing of the coriander at the end. So I don't think it was written in the डिस्क्रिप्शन आइदर. नाजरीन, ये देखो जी, ये कितना खूब सालन बनाया. मशरूम का तो टेस्ट ही और है, और साथ जो रोटी पे बटर लगाते हैं उसका भी बहुत ही उससे भी बहुत yummy और tasty होता है. So I love this, especially mushrooms. Mushrooms have so many health benefits. Okay guys, that is it. I hope yours turns out as good as this picture. So we make this quite regularly. So as always, I have prepared the Urdu translation, but if I read it, it'll take us another 12 minutes, and as always, I wanted it to be a 10-minute presentation. नाज़रीन, मैंने उर्दू भी तैयार की हुई है, वो आपको दिखाएंगे तो फिर ख़त्म करते हैं, क्योंकि as always वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है. So there's the Urdu if you want to go step by step in Urdu. I'm sure you all know how to make roti, but the roti trika is there as well. Nazrin, ye hai ji Urdu ka translation. That is it. I thank you for watching. I ask you to please like, share, and subscribe to the channel. Until the next time, look after yourselves, look after others. Goodbye. नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना. अल्लाह हाफिज.